Okay, when I was in Sarajevo, I walked along the main street. During the war, it became known as Snipers alley because civilian men, women, and children were killed by riflemen crouched in the surrounding hillsides and neighboring buildings. This street became one of the most powerful symbols of the horror of the war. How does a normal city street come to that? This war, like all others, was fueled by any effective form of neural manipulation, one that been practiced for centuries. Propaganda. During the Yugoslav war, the main news network, radio television of Serbia, was controlled by the Serb government and consistently presented distorted news stories as factual. The network made of reports of ethnically motivated attacks by Bosnians, Muslims, and Croats against the Serb people. They continually demonize Bosnians and the Croatians and used navigate language in their descriptions of Muslim. At the height of bizarreness, the network broadcast and an unfounded story that Muslims were feeding Serbian children to the hungry lions of the Sarajevo Jew. Genocide is only possible when dehumanization happens on a massive scale. And the perfect tool for this job is propaganda. It keyes right into the neural networks that understand other people and dials down and the degree to which we empathize with them. We have seen that our brains can be manipulated by political agendas to dehumanize other people, or which can then lead to the darkest side of human acts. But is it possible to program our brains to prevent this? One possible solution lies in a 1960 experiment that was conducted not in a science lab but in a school. It was 1968, the day after the assassination of civil rights leader Martin Luther King. Eliot, a teacher in a small town in Iowa, decided to demonstrate to her class what prejudice was about. Zane asked her class whether they knew how it would feel to be judged by the color of their skin. The students mostly thought they could, but she was not so sure. So he launched that what was destined to become a famous experiment. She announced that the blue-eyed people were the better people in this room. Zane Elliot, the brown-eyed people, do not get to use the drinking fountain. You will have to use the paper cups. You brown-eyed people are not to play with the blue-eyed people on the playground because you are not as good as blue-eyed people. The brown-eyed people in the room today today are going to wear collars so that we can tell from a distance
what color your eyes are. On page 127, is everyone ready? Everyone but Lori ready? Lori. Child, she is a brown eye. Jane. Jane. She is a brown eye. You will begin to notice today that we spend a great deal of time waiting for brown eyed people. A moment later, Jane looks around her yardstick and two boys, a pipe of Rex points out to her where the yardstick is. The Raymond helpfully offers, "Hey, Mr. Elliot, you better keep that one your desk. So if people, the brown-eyed people get out of hand." I recently sat down with those two boys, now grown men, Rex Kozak and Ray Hansen. They both have blue eyes. I asked them if they remembered what their behavior was like on that day. That day, Ray reported that I was tremendously evil to my friends. I was going uh, out of my way or to pick on my brown-eyed friends. For the sake of my own promotion, he recalled that at that time his hair was quite blonde and his eyes were quite blue. And I was the perfect little Nazi. I looked for ways to be mean to my friends who minutes or hours earlier had been very close to me. The next day, Zane reversed the experiment. She announced to the class, brown eyed people may take off their collars, and each of you may put your collars in a blue eyed person. The brown eyed people get 5 extra minutes to recess. You blue eyed people are not allowed to be on playground equipment at any time. You blue eyed people are not to play with the brown eyed people. Brown eyed people are better than blue eyed people. Reske described what the reversal was like. It takes your world and shatters it like you have never had your world shattered before. When Ray was in the down grove, he felt such a deep sense of loss, of personality, and of self that he felt it was almost impossible to function. One of the most important things we learn as humans is perspective taking, and children don't typically get a meaning meaningful exercise in that. When one is forced to understand what it's like to stand in someone else's shoes, it opens up new cognitive pathways. After the exercise in Mrs. Eliot's classroom, Rex was more vigilant against the racist statements. She remembers telling his father, "That's not appropriate." Rex remembers that moment fondly, and he felt affirmed by it, and he knew he had begun to change as a person. A brilliance of the brown eyes exercise was the Zen Elliot switch which group was on top that allowed to children to extract a larger lesson. Systems of rules can be arbitrary. The children
learned that the truths of the world are not fixed, and the moreover they are not necessarily truths. This exercise empowered the children to see through the smoke and mirrors of political agendas and to form their own opinions. Surely a skill we would want for all our children. Education plays a key role in preventing genocide. Only by understanding the neural drive to form in-group and out-groups, and the standards tricks by which propaganda flows into this drive, can we hope to interrupt the paths of dehumanization that end in the mass atrocity. In this age of digital hyperlinking, it's more important than ever to understand the links between humans. Humans' brains are fundamentally wired to interact. We are a splendidly a social species. Although our social drives can sometimes be manipulated, they also sit squarely at the center of human success story. You might assume that you end at the border of your skin, but there is a sense in which there is no way to mark the end of you and the beginning of all those around you. Your neurons and those of everyone on the planet interplay in a giant shifting superorganism. What we demarcate as you is simply a network in a larger network. If you want a bright future for our species, we will want to continue to research how human brain interact, the danger as well as the opportunities, because there is no avoiding the truth. It is into the wiring of our brains. We need each other. ओके, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट दिस टॉपिक में द टॉपिक ये है कि सी मोर इक्वल दैन अदर्स. मुझे एक बात इसमें समझ में आ गया कि हम ह्यूमंस ना बने ही एक दूसरे के साथ देने के लिए, हेल्प करने के लिए. बिकॉज हम कब साथ देते हैं, जब हम इंटरेक्ट करते हैं. तो हम एक ऐसी स्पेसिस हैं जहाँ पर हमें इंटरेक्शन चाहिए, सोशल इंटरेक्शन हो या जो भी हो, सोशल इंटरेक्शन चाहिए. लोग चाहिए हम बात करें उनसे, क्योंकि हम ऐसे ही अगर हम बात नहीं करते हैं तो हमारे जैसे हमारे जो ब्रेन सर्किट्स वो उसमें भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है. एंड इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक छोटे बच्चों के ऊपर, ब्राउन आइज ब्लू आइज के लेकर. एंड यहाँ पर एक ऐसी कंडीशंस थी कि जो ब्लू आइज वाले हैं वो ब्लू आइज से ही खेल सकते हैं, एंड जो ब्राउन वाले ब्राउन से ही खेल सकते हैं. ब्लू ब्राउन वाले से नहीं खेल सकता, ब्राउन ब्लू वाले से नहीं खेल सकता. ओके, तो ये कंडीशन पहला था. नेक्स्ट सिनेरियो में इसका रिवर्स कर दिया. जो ब्राउन वाले ने पहले जो सिनेरियो में, पहले केस में जो ब्लू वाले होते हैं वो थोड़ी सी टॉप वाले होते हैं, उन्हें थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाता है कि हाँ ये थोड़े ज़्यादा है. इनके साथ तुम ब्राउन वाले ब्लू वालों से तुम खेल नहीं सकते, बच्चे तुम खेल नहीं सकते इनके साथ.
इन द नेक्स्ट सिनेरियो में इसका रिवर्स कर दिया कि जो ब्राउन वाले होते हैं, जो वो ना ब्लू वाले से ज़्यादा बेटर होते हैं। तो इसमें पहला पलट देने के लिए यहाँ पर एक रेक्स नामक बच्चा होता है, वो उसके जो ब्लू वाले आइस में है, तो वो रजिस्ट करता है। क्यों? तो इसमें एक निकल जाता है वो रिवेंज टाइप का एक इमोशंस कि क्यों नहीं दिया जाता। हम तो पहले बहुत हम पहले थे, तो उन्हें हमारे पास भेजा जा रहा था, हो उन्हें हमारे साथ खेलना नहीं था, लेकिन अभी क्यों वो बेटर हो गए, तो उनके मन में, उनके दिमाग में क्रिएट हुआ, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, एंड वो रिवेंज जैसे कि कुछ ऐसी फीलिंग्स में वो फंस जाते हैं। इसमें से और एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हम जो चीज़ हमें दिखाई जाता है और जो चीज़ हमें बार बार सुनाया जा रहा है, हम उसी चीज़ को रियलिटी मानते और ट्रूथ मानते हैं। जैसे कोई कह रहा है, जैसे कि हम देखते हैं ना, कोई एक एक्सपर्ट जो एक पंडित के अलावा कितना विज्ञान बड़ा ज्ञानी है, वो कहता है कि कुत्ता का 7 पैर हैं, हाथी एक लंबा है। जैसे कि हम जो भी कहते हैं ना, उसे मान लेते हैं, क्योंकि जो बड़े पहले जो ऊपर जा चुके हैं, एंड उनकी जो बोलते हैं, वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारे दिमाग में। क्योंकि जैसे कि हमें एग्जांपल लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अरे भाई, जो जितना प्रोपेगेंडा चला पाया वो इतना ही जीतेगा ना। प्रोपेगेंडा या जितना भी कर सकता था, देखा विजुअली हो, वर्बली हो, गाइडली हो, जो भी जैसे भी जितना वो दिखा सकता था, एडवर्टाइजमेंट कर सकता था, उसी की ही लाभ होगी उसमें। तो इसमें भी और एक चीज़ सीखने को मिलता है, जब तक अगर आपके पास काबिलियत हो कि जो कुछ भी तुम कर सकते हो, मैं स्टेज में जाकर स्पीच अच्छे से दे सकता हूँ, तो ये कैसे प्रूफ हो सकता है? तुझे तो पता है कि हाँ, तुझे पता है कि तू स्पीच अच्छे से दे सकता है, बट तो तुम्हारे जो अराउंड्स में हैं लोग, उन्हें थोड़ी पता है कि तुम उसमें जाकर अच्छे से बोल सकते हो। उन्हें रियलाइज करने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, इसीलिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, आपको एक डालना पड़ेगा उसमें, सिचुएशन में आपको जाना होगा स्टेज पे, उसमें आपको बोलना होगा, तुम्हारे फ्रंट में बहुत सारे लोग होंगे, एंड उसमें बाद जो वो आपका स्पीच सुनने के बाद वो डिसाइड करेंगे, हाँ ये तो अच्छा बोलता था, कहाँ था। तो मेरा जो लास्ट में जो सीखने वाली चीज़ है ये है कि जो भी टैलेंट है उसे आप बाहर निकालो। अंदर रख के क्या करोगे यार, बाहर निकालो। ज़रूरत टाइम, ओके, मैं ये कहता हूँ इसमें नोट करने की बात है, ज़रूरत पड़ने वाली टाइम पे, एंड जब ज़रूरत होगी ना, उसी टैलेंट में माहिर होकर रहना, एंड जिस दिन जो टैलेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसी टैलेंट को आप बाहर निकल के फोड़ देना, जस्ट ओके। एंड कभी अंदर मत रखना, एंड बाद में आपको रिग्रेट रह जाएगी कि हाँ ये मैं कर नहीं पाया, ऐसा ऐसा। तो लास्टली मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि जो हमारे सराउंड्स में होते हैं, दैट अफेक्ट्स मोर, वाई लोग कहते हैं एनवायरनमेंट को चेंज करो, आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली संवर जाएगी। क्योंकि जो लोग कहते हैं, जो हम देखते हैं, उसे हम बिलीव करते हैं। सपोज और एक एग्जांपल कहना चाहूँगा, आई विल टेक मोर टाइम, बट ये एग्जांपल से आप समझ में आ जाएगा इजीली। सपोज एक लड़की काली है,
ओके सॉरी, मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता। ओके ओके, एक गर्ल हमना ब्राउन स्किन, वो पहली तो अच्छी नहीं लगी पहली दिन। एंड एट द अगेन उसके साथ उसकी दोस्त भी बहुत ब्यूटीफुल गर्ल है, वाइट स्किन वाले बहुत अच्छे है। But when you see and when you have a talk with the brown girl, and over the time you see her face, वो आपको अच्छी लगने लगेगी। क्यों? Why? This is also the propaganda। जो लॉजिक लगती है उसी लॉजिक से भी ये भी अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ कितनी एडवर्टाइजमेंट होती है, जितना प्रोपागेंडा आप दिखा हो सकता है, उस जितनी बार आप एक चीज़ को देखते हैं ना, उतनी बार ही वो चीज़ आपको पसंद आती है। उसी हिसाब से ये लॉजिकल लगता है। ओके, लगभग 21 मिनट हो चुका है एंड उसके जो पहले वाला पार्ट जो कि लगभग 1 घंटा का होगा एंड वो आधे में कट गया। उसके लिए सॉरी, बिकॉज़ मेरी जो स्टोरेज की तो कुछ इश्यूज़ हैं एंड इसे मैं ऐसे ही अपलोड करने वाला हूँ अलग-अलग पार्ट में, बिकॉज़ मेरे पास अभी स्टोरेज नहीं है कि मैं इसे एडिट करने में एडिट करके मैं इसे दोनों को एक में मिक्स करूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए बाय एंड ख्याल रखना अपना। एंड थैंक यू करना चाहूँगा मेरे कृष्णा जी को, मेरे माता और पिता को एंड मेरे सराउंड्स में मेरे दोस्त को, मेरे कलीग्स को एंड मेरे जो आने वाले स्ट्रेंजर्स, जो मेरे स्ट्रेंजर्स हैं मेरे ज़िंदगी में आए हैं उनके लिए भी, एंड जो मेरे ज़िंदगी में आकर चले गए हैं उनको भी मेरा धन्यवाद एंड थैंक यू कहना चाहूँगा उनको भी। एंड स्पेशली मेरे कृष्णा जी को जिन्होंने इतना बेहतरीन दिन दे दिया है। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग कृष्णा। एंड तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज यू, एवरीथिंग इज यू एंड सबके अंदर तुम हो एंड तुम में सब है। ओके, बहुत ज़्यादा भी लाइट टाइम हो गया, रात के लगभग 1 बज चुके होंगे, बट आई विल आफ्टर अपलोड में इसे अपलोड बिना किए मैं सोने नहीं वाला हूँ, तो मैं इसे अपलोड करेंगे। तो ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना एंड कीप स्माइलिंग एंड बाय, अपना ख्याल रखना, बाय।